हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कोर पल्मोनल। नाउ कोर पल्मोनल को मैंने अक्सर लोगों को देखा है डिफाइन करते हुए दैट कोर पल्मोनल इज द राइट वेंट्रिकुलर फेलियर और द हार्ट फेलियर। कोर पल्मोनल इज डिफाइंड एज द हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर। सो आप इसको ऐसे मत डिफाइन करो। अगर आप ऐसे डिफाइन करोगे तो वो सही डिफिनेशन नहीं है। वो हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर वो इसका कॉम्प्लिकेशन है। तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे दैट कोर पल्मोनल इज अ डायलेटेशन और हाइपरट्रॉफी ऑफ राइट वेंट्रिकुलर with or without failure. Suppose here that with or without failure, which is secondary to a disease of lung parenchyma, pulmonary circulation, and thoracic cage. समझे? तो इसका डिफाइन देखो कैसे है कि कोड पल्मोनल इज द डायलिटेशन और हाइपरट्रॉपी ऑफ राइट वेंट्रिकुलर with or without failure which is secondary to a disease of lung parenchyma, pulmonary circulation, and thoracic cage. So here हम लोग तीन की पॉइंट्स क्या क्या है डिजीज ऑफ लंग पैरेन्काइमा एंड डिजीज ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड डिजीज ऑफ थोरैसिक केज। तो इन तीनों डिजीज के कारण आपको कोर पल्मोनल हो सकता है। सो लंग पैरेन्काइमल डिजीज क्या क्या है, जैसे कि सीओपीडी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, bronchiectasis, interstitial lung disease. These are the lung parenchymal disease. Now disease of pulmonary circulation क्या है, that is recurrent pulmonary thromboembolism, primary pulmonary hypertension and pulmonary vasculitis. एंड thoracic case disease क्या है, जैसे कि kyphoscoliosis, neuromuscular disease and the obesity hypoventilation syndrome. These are the thoracic case disease. Now इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है कोर पल्मोनल का। कोर पल्मोनल के ऐसे देखिए सपोज कीजिए आपको क्रोनिक लंग डिजीज है। क्रोनिक लंग डिजीज के कारण जो आपका पल्मोनरी बेड है, पल्मोनरी वास्कुलर बेड, वो डिक्रीज हो गया। तो क्रोनिक lung disease leads to the decrease in pulmonary vascular bed, which will leads to the pulmonary hypertension, and this pulmonary hypertension leads to the right ventricular hypertrophy and leading to the right ventricular failure. And this chronic lung disease also leads to the hypoxia and hyperviscosity of blood, ultimately leading to the pulmonary hypertension and ultimately leading to the right ventricular failure. And here in the right side we can see that chronic lung disease also leads to the high acidosis and hypercapnia, which will lead to the pulmonary hypertension and ultimately the right ventricular failure. Now what are the signs and symptoms in the core pulmonale? Sign and symptoms. What first we should know, what is the difference between sign and symptoms? Sign is what the doctor see, symptoms what the patient brings to the doctor. So here sign we have loud P2, raised JVP, pulmonary regurgitation, tricuspid regurgitation, and the ascites. And the symptoms we have dyspnea, syncope, chest pain, wheezing, and the cough. Now, what is the investigation we should do in the core pulmonale? So we can do the chest X-ray, echocardiogram, lung biopsy, and the pulmonary function test. These are the tests we should do in the core pulmonale. What is the treatment for core pulmonale? Treatment, we should treat the underlying cause. Suppose the patient is in the hypoxic condition, we should give him the oxygen. And if he is suffering from edema, we should give him diuretics and AC inhibitors. And we can give him the bronchodilator because there is a bronchospasm in the core pulmonary condition. And we should give him anticoagulant or the blood thinners because there is formation of thromboembolism. And at the last, if nothing works, we can do the surgery. Thank you. Please subscribe to my channel and hit the like button.